So good morning everyone. This is our second episode of Lifestyle as Medicine. आप लोग का सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ये मेरा दूसरा एपिसोड है लाइफस्टाइल एज मेडिसिन। ये जो नया सीरीज शुरू किया है, ये इसलिए शुरू किया है क्योंकि काफ़ी लोगों के सवाल मुझे आते रहते हैं कि DXN के प्रोडक्ट्स कैसे हैं, लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करनी चाहिए और हमने क्या लेना चाहिए, कितना डोसेज लेना चाहिए। The reason I have started this program is because I had been getting a lot of questions about what is the right way to take DXN products, how much should be the dosage, what kind of food you should be, what kind of things you should follow, and all those things. And in general, they were all asking about lifestyle. And I believe that if you understand that you can change your current condition by changing your lifestyle. But lifestyle comes with certain behavior. जो भी आपकी जीवन शैली है वो आपके कुछ स्वभाव की वजह से आती है। अगर उसमें आप परिवर्तन ला पाए तो आप जरूर उस बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। तो लेट्स गो डायरेक्टली टुडेज टॉपिक। आज को जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ जाएंगे।
लेकिन इसके पहले मैं लोगों को सबको आई लाइक टू विश एवरीबडी आउट देयर. आई सी लॉट ऑफ पीपल हियर. आई सी लॉट ऑफ पीपल हु केम फर्स्ट अर्ली हियर. पीपल फ्रॉम फिलीपींस. Hello everyone. People from Mexico. Hi there. People from Dubai. I found people from India. Everywhere. Great to see you all. बहुत अच्छा लगता है आप लोगों सबके लिए ये प्रोग्राम करते वक्त. और ये प्रोग्राम आज का बड़ा छोटा होगा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होगा. Today's program will be a short one, but it's a very important program. This will define us. Why are we not micronutrition therapist? We are macronutrition therapist. ये हमको ये बताएगा कि जो डॉक्टर लिम कहना चाहता है कि मैक्रोन्यूट्रिशन के बारे में, ये इस प्रोग्राम में आपको समझ में आएगा. सो अगर आप आज का टाइटल देखोगे तो टाइटल बहुत क्लियर है, मैक्रो फूड सप्लीमेंट्स. राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्रो फूड सप्लीमेंट्स. Oh, there is a lot of disturbance. Is there a disturbance? Oh, then I need to change the mic. Can somebody confirm if the voice has a lot of disturbance? Alai Park, can you just confirm if the voice has a disturbance, some kind of disturbance? Anybody out there? Is my voice audible? Is there a disturbance? Should I shift on my microphone? I think no disturbances. Very good. Rajan KV just confirms that clear. Thank you so much. Thank you so much. So we go to our session today. So this is the best thing about doing a live show where you have interaction. Now Shazid Talib says no, it's all good. So we have everybody with us together. It is like doing a live show, and this is the fun of doing a live show. So what we're going to do today is we're going to study very important factor about DXN products. अगर आपको ये बात समझी तो आपको DXN products समझ में आए. If you understand this topic that I'm going to teach you today, you will understand what DXN products are and how you can pitch them to people. Because today the world is all gaga about nutrition. पूरी दुनिया अभी न्यूट्रिशन की बातें कर रही है. तो हमें भी ये जरूरी है कि ये जानना कि हम कैसे उन न्यूट्रिशन सेगमेंट में भी कैसे अलग हैं. वी हैव टू नो दैट द वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशन, बट येट हाउ आर वी डिफरेंट फ्रॉम द अदर कंपनीज एंड व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट DXN. सो टू स्टार्ट, लेट्स गो डायरेक्टली टू द कॉन्सेप्ट ऑफ What are macro and micronutrients? ये क्या है? What is it? क्या है ये macro और micronutrients? इसको समझने के लिए आपको इसको पूरी डिटेल के साथ समझना पड़ेगा. पहले first we'll have to understand that macronutrients are nothing. Very very simple. This everybody should know, and I'm sure everybody knows this. Food is basically made out of three major nutrient components, that is carbohydrates, proteins and fats. खाना जो होता है ये तीन चीजों से बना होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स. ये आप सबको मालूम ही होना चाहिए क्योंकि यही बेसिस है. दिस इज द बेसिस ऑफ आवर मैक्रोथेरेपी बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. सो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, दे मेक macronutrients. How do we know about it? Long have we consuming it? It's been over the years. Human civilization has thrived on it, has survived on it, and we should know something very very important about macronutrients. हमारे पूर्वजों से आते हुए अब तक हम लोग इसी पे जिए हैं और ये हम खाते आ रहे हैं. ओके, तो ये क्या है बेसिकली? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात जब करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्या है? आप जो भी कुछ खाते हो उससे आपको जो एनर्जी मिलती है, वट एवर यू ईट दैट गिव्स यू एनर्जी. आई एम टॉकिंग अबाउट फूड, प्रॉपर फूड दैट गिव्स यू एनर्जी is basically because of something called carbohydrate. So very simple, where does your energy come from? Carbohydrates. Why do we need energy? We need energy because we want to walk, we want to talk, we want to work, we want to do everything, and for everything you need energy. Energy comes from the immediate source is carbohydrates. आपके शरीर को जो लगने वाली ऊर्जा है, ऊर्जा कहाँ से आती है? तो वो कार्बोहाइड्रेट से आती है. ये कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से मिलते हैं? हमको जो भी खाना होता है उसमें से मेजर जब होते हैं धान, फिर शुगर्स हो गए,
फिर लेग्यूम्स हो गए, ये जो भी होती है सब्जियां होती है, इन सब से हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत वास्ट होते हैं, देयर इज अ ह्यूज रेंज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें से देयर आर गुड कार्बोहाइड्रेट्स एंड द बैड कार्बोहाइड्रेट्स। द गुड कार्बोहाइड्रेट्स आर वन दैट आर पॉलीसैकेराइड्स, जो लंबी चेन से बने हुए हैं, एंड द बैड वंस वेयर द बॉडी डजंट हैव टू वर्क एट ऑल and it's very very easily digestible, this go into your bloodstream, are monosaccharides. So now you have to understand that carbohydrates are going to be the most important energy fuel for your body. Then second macronutrient you have to understand is proteins. Now proteins are the basically building blocks of your body. Anything in your body is a machine. It runs on energy which is provided by carbohydrates, but proteins are basically the ones that do the repair of the damage that happens. So whatever you eat, if it has these proteins which we call amino acids, these amino acids, they help the body to recover, to heal itself. That is why most of your hormones, all your enzymes and all those things are basically nothing but amino acids based. They are basically your proteins. So proteins, they build up your immune system also. So even if your immune system has to be active, it needs energy, but if it needs to be strong, it needs proteins. Understand the difference, okay? आपके जो रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ाने वाली जो शरीर के अंदर जो सिस्टम होती है, इसमें उसको रोग प्रतिकार क्षमता को ताकत देने के लिए, ऊर्जा देने के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है। लेकिन आपके शरीर को जो रोग प्रतिकार क्षमता जो सिस्टम है, उसको बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए, जिससे ताकत मिलती है, वो है आपके प्रोटीन्स। और वो हमको किससे मिलते हैं? हमको धान से मिलते हैं, वही सब्जियों से मिलते हैं। अब आप ये समझ लो, ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, ये तीनों जो है ये साथों साथ चलते हैं। ये किसी में कुछ ज्यादा कुछ कम होते हैं, लेकिन हमेशा साथ रहते हैं। Remember always this: carbohydrates, proteins and fats, they always together, they come as a combination, you never separate them up. So when they are in combination, they work much better, they are in their natural form. तो यहाँ समझना चाहिए। So proteins are the building blocks, so they do the repair, while carbohydrates, they give us the energy. Then you go forward, you understand fats. Now fats are also a part of macronutrients. Fats basically help in lubrication, they protect your organs, they are a major source for your nervous system. Your neurological system is basically dependent on fats you eat, fatty acids. In this also very important, the saturated and the unsaturated fatty acids. These are very important fatty acids. So what kind of fatty acids you are taking? One which are animal based or vegetarian based, that is also important. Others are naturally acidic, others are alkaline. You have to know what the source is. So fats are going to play a very important role. So macronutrients basically consist of carbohydrates, proteins and fats. Now you have to understand the relation between three. First, when your body needs energy, जब आपके शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है, पहले वो कार्बोहाइड्रेट से लेता है, और कार्बोहाइड्रेट अगर नहीं मिला तो वो जाता है दूसरे लेवल, जहां से वो लेता है वो है अपने फैट से। First, the body, when it needs energy, it goes to the carbohydrate, it consumes the carbohydrates. So carbohydrates get depleted fast. Then if it doesn't get carbohydrates, it goes to the fats and it starts using them as energy source. So now you might have heard a lot about the fat diet, low carb fat, high fat diet. These diets are very common now, people are talking about it, but we talk about wholesome diet, the whole three, carbohydrates, proteins and fats. Now when you understand this, so you will realize that our whole concept is based on this. Now where do I get these macronutrients from? I get most of my sugars that I need, the monosaccharides, the disaccharides, the glucose, the fructose and all those from fruits. You can use a lot of fruits. आप
फल खा सकते हो। फल से आपको जो शरीर के अंदर जो ऊर्जा चाहिए वो इमीडिएटली मिल जाती है। फल हमारे लिए काफी अच्छे होते हैं, इसीलिए फल खाना बहुत जरूरी होता है। स्पेशली अगर बच्चों को खेलने के लिए भेजते हो तो आप उसको फल दो। इफ यू सेंडिंग अ चाइल्ड टू प्ले, यू गिव देम फ्रूट्स। यू सी टेनिस प्लेयर्स, लॉट ऑफ टेनिस प्लेयर्स इन बिटवीन दे टेक अ banana. Banana is a good source of carbohydrates, almost 95% carbohydrates and less than 5% of proteins and fats. So you see avocado is exactly opposite, almost 70 to 80% fat and 10 to 15% carbohydrates, and the rest is protein. So they keeps on changing depending on the fruit to fruit. Then I get my carbohydrates, I get my energy source from the fruits. Then second, where do I get my proteins from? Proteins कहाँ से मिलेंगे मुझे? From green veggies, green vegetables. If you see, Dr. Lim is now advocating the green food diet. You know, he's telling us how green food is very very important. अब इसमें भी आपको ये समझना जरूरी है कि आपको प्रोटीन कहाँ से मिलेगी। हरी चीजों से प्रोटीन मिलेगी। हरी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपके डाइट में होनी ही चाहिए। इन हरी चीजों से आपके शरीर में जो रिपेयर मैकेनिज्म के लिए जो मटेरियल चाहिए वो चला जाता है, और प्रोटीन के माध्यम से आपके शरीर में वो बनना शुरू हो जाता है। और इस पे हम आगे चल के सवाल भी देखेंगे, क्योंकि लोग बहुत सारे लोग कहते हैं किडनी के पेशेंट को उनको प्रोटीन खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। आप अगर समझ में आ रहा है कि मैं जिस प्रोटीन की बात कर रहा हूँ वो वेजिटेरियन बेस्ड है और ये तो खाना ही चाहिए, इसके सिवा आपका बॉडी में रिकवरी हो ही नहीं सकती है। सो ग्रीन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डाइट एंड यू शुड बी कंज्यूमिंग इट। देन वी गो टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ, you can imagine fat coming in the form of carbohydrates, proteins and fats. And this is what Dr. Lim introduced me, and he said millets are going to be very essential for this type of fat and proteins and carbohydrates, and it's a fantastic combination. ये जो धान होती है हमारे देश की, ये धान हमारे पास रंग बिरंगी धान है। ये धान को अगर आप उबाल के खा सकते हो, उसको कंजी, हम जिसको कौंजी बोलते हैं, जस्ट टेक सम मिलेट्स, अ हैंडफुल ऑफ मिलेट्स, पुट देम इन द वाटर, बॉईल देम एंड टेक देम एज अ सूप. दैट इज अ गुड for your stomach, for your gut. It's fantastic for your the oil reserves, to put back your oil reserves in your body, your proteins, and it's an immediate source of energy also, and it's not heavy on your body. Very good for शून्य practice, शून्य ध्यान के लिए भी काफी अच्छा है। तो इस पर भी हम लोग काफी बातें करेंगे। मैं सिर्फ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात कर रहा हूँ कि ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ये बड़े वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये हमें ज्यादा चाहिए, हमें ये खाने में चाहिए, और खाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने देखिए तीनों दिखाए। वट एवर आई हैव शोन यू इज थ्री थिंग्स। फर्स्ट इज द फ्रूट्स, when I showed you the green veggies, and now I'm showing the grains. These are the primary source of your food. If you are consuming this, you are absolutely fine. You're getting all your reserves, all your food. Now the question is, अभी सवाल ये आता है कि आप तीनों अगर खाते हो, फल, सब्जियां और धान भी खा रहे हो, तो क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्या उस सब्जियों में, उस धान में, उस फलों में सब कुछ सही है? नहीं, वहां कुछ कमी है। There is something deficient in the fruits, the veggies and the grains, and that is why we need to supplement that part of your diet. We have to supplement that part of your food, and that's where you should understand comes in the concept of macronutrients, which is different than micronutrients. Now what I am showing you right now on the screen behind me is micronutrients. Now when I talk about micronutrients, जब मैं micronutrients की बात करता हूँ तब मैं किसकी बात करता हूँ? विटामिन्स, मिनरल्स। ये बहुत अलग है। ये विटामिन्स और मिनरल्स ये मतलब किसी चीज में से एक्सट्रैक्ट निकाल के या किसी चीज में से प्राइमरी इंग्रेडिएंट दिखा के बताया जाता है कि इसमें ये है। जैसे नींबू ले लो, नींबू के अंदर विटामिन सी माना जाता ज्यादा है। समटाइम्स विटामिन्स एंड मिनरल्स आर इंग्रेडिएंट्स दैट आर पार्ट ऑफ अ मैक्रो न्यूट्रिएंट, and they are these small elements. They are very important for your body also, because they help in the proper metabolism, they help in building your body tissues. Something if there is some deficiency of any of these, then you see some symptoms, but if there is something excess of this, you still see symptoms. This is why micronutrients should be taken under medical supervision with a proper nutritionist, a physician, or a proper clinical dietitian.
you have to take this under proper guidance. So minerals और vitamins ये जो होता है ये आपको किसी वैद्यकीय सलाह के अनुसार ही लेना चाहिए, क्योंकि इसकी अगर आपके शरीर में कमी होगी तो भी प्रॉब्लम होता है, अगर हद से ज्यादा लिया तो भी प्रॉब्लम होता है। ओके तो ये बहुत याद से रखना है। तो मैं जिसकी बात कर रहा हूं मैं आपको दोनों डिफरेंस बता रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट द टू डिफरेंसेस, द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो नाउ इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इज वेरी सिंपल। नाउ व्हाट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स? ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में और थोड़ा डिटेल बता देता हूं। आई विल टेल यू अ लिटिल मोर अबाउट इट। नाउ यू सी ऑन द स्क्रीन दिस रेड कलर, इट इज इन डिफरेंट शेड्स। ये लाल कलर का जो मैं शेड दिखाया है, आप देखोगे कि ये जो है ये शेड अलग अलग कलर्स में है, कुछ डार्क है फिर धीरे धीरे लाइट लाइट होते जा रहा है। ऑन द वन साइड इट इज डार्क and then it gets lighter and lighter. You see the red shade. Exactly that's how vitamins, minerals and other trace elements are found in food. They keep on varying in their proportion. इसी तरह नींबू में विटामिन सी कोई कौन से स्पेक्ट्रम में होगा पता नहीं है, इमली में भी हो सकता है। विटामिन सी इज फाउंड इन द लेमन, इट इज ऑल्सो फाउंड इन टैमरिंड, and so is it also found in roselle. So we have to understand that it is a part of most of the things, but the variation keeps on changing, but that doesn't decide us that we have to take only this. हमें सिर्फ ये नहीं समझना कि यही लेना है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ये हमें सब्जेक्ट पे हाथ नहीं लगाना है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट DXN and DXN products, don't get yourself involved in this conversation. This is a debatable conversation, this is a research based conversation, this is like medicine. ये दवाइयों की तरह बातें होती है, इसमें मत जाइए, इसके बारे में ऐसे डिस्कस भी मत कीजिए। This is not the right way to handle your macronutrient concept. Now what is macronutrient? Now you have to understand, I put this difference. अब मैंने ये दोनों के बीच में फर्क करके दिखाया है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ओके, दे विल प्रोवाइड यू एनर्जी, ये आपको ऊर्जा देंगे, मतलब आपका खाना। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड अस एनर्जी। एंड व्हाट डज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डू? दे आर अ पार्ट ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, बट इंडिविजुअली आल्सो देयर जॉब इज टू मेंटेन एनर्जी, एंड एवरी micronutrient has a different function, but as a macro it's a general function. Okay, so macronutrients provide energy, micronutrients they are part and responsible for maintaining the energy. Then in macronutrients you need to take large quantity. For example, if you have to eat fruits, you cannot take one pill of apple, you have to take an apple. इसमें क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आप ज्यादा अमाउंट का लेते हो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आप कम अमाउंट में लेते हो। तो आप नींबू का जूस पी सकते हो, lemon juice, you can take a whole 2 lemons also in a nice glass of water and you can drink. That's taking it as macronutrients. But if you take the extract and only vitamin C out of it, then you cannot take 10 capsules. You cannot take that. आप नींबू का 2 नींबू निचोड़ के एक जूस पी सकते हो, लेकिन 2 नींबू से अंदर से विटामिन सी निकाल के आप 10 कैप्सूल नहीं खा सकते। ये आप समझ जाइए, प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस। सेम इज विद शुगर। people ask, in India we drink this whole glass of sugarcane juice. When we go out, I actually drink 2-3 glasses. I love sugarcane juice. गन्ने का जूस जो होता है, हम जब जाते हैं तो हम 1 से 2-3 ग्लास भी पी लेता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन आप वो गन्ने का जूस जो पी रहे हो वो मैक्रोन्यूट्रिएंट है, लेकिन जैसे ही आप उस गन्ने के जूस में से आपने शक्कर निकाली, आप वो नहीं खा सकते। आप एक चम्मच भी आपके लिए जहर का काम करेगी, जरूरत नहीं रहेगी। तो इफ यू टेक आउट 1 spoonful ऑफ sugar from the sugarcane juice, that is more dangerous than drinking 2-3 glasses of sugarcane juice in its macronutrient form and not in its micronutrient form. This is the difference you have to understand. Then what are macronutrients? They help you to grow, develop and repair, and it makes you feel good. Now important, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मैक्रोन्यूट्रिएंट करता क्या है। आपके शरीर में जो ग्रोथ है, जो बढ़ना चाहिए उस चीजों को बढ़ाना, जो चीजों को आगे डेवलप होना है, जैसे बच्चों के अंदर डेवलपमेंट और ग्रोथ होनी चाहिए, वो सही होना, ये आपका खाना करेगा, आपका खुराक करेगा। द फूड इज गोइंग टू डू दिस पार्ट ऑफ योर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिपेयर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वी नेवर टॉक अबाउट दिस। ये आपके शरीर में जो रिपेयर है, जो प्रोटीन का काम, जो मेजर काम है, ये भी your macronutrients do. So repairing is also a part. Now and then the feeling is also important. इसलिए खाना खाने के बाद you will feel good.
For again, let's go back to the lemon juice. Lemon juice, if you drink 1 glass, 2 glass, you feel good, you feel energy, you feel that you more vitality. But that's not the case with vitamin C. If you just pop in 1 capsule, 2 capsule, 5 capsule, there's no feeling of suddenly you don't feel good and nothing like that, because that is just taking care of some deficiency and just going to supplement vitamin C. सिर्फ विटामिन सी को सप्लीमेंट करने वाला, ये दोनों में फर्क है। अब ये जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये फंक्शनल फूड है। फंक्शनल फूड का मतलब है ये इसके पीछे कार्य होता है। ओके, हर खाना जो आप खाते हैं उसके पीछे कार्य होना जरूरी है। जैसे आपने चावल खा लिया, चावल खाने के बाद आपको ऊर्जा मिलनी जरूरी है। So similarly, every food has its basic function, and there are particular functions that food can do, and we will go into the depth of it in the future episodes. आने वाले episodes में हम इसके बारे में डीप में बात करेंगे, लेकिन हर खाने का कहीं ना कहीं एक रोल होता है। जैसे मिर्ची का कोई रोल होता है ना, जैसे इमली का कोई रोल है, फिर आप शक्कर ले लो, शक्कर का कोई रोल है, हर एक खाने का कोई रोल होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट फंक्शनल फूड हैव अ रोल। नाउ vital ingredients of the functional food. Now what are micronutrients? They are vital ingredients of the functional food. ये जो खाना होता है उसके अंदर अगर इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वाइटल, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। सो मैक्रो के अंदर माइक्रो होता है, आप ये समझ लो। सो मैक्रो अगर आपने ले लिया तो माइक्रो ले ही रहे हो, लेकिन माइक्रो ले रहे हो इसका मतलब मैक्रो ले रहे हो ऐसा नहीं। Now for example, let's say carbohydrates, as I said, they are polysaccharides, carbohydrates polysaccharide भी है। अगर हमने carbohydrate लिया, okay, in its form, natural form, that means carbohydrates in the form of fiber also, तो ये फाइबर वाला कार्बोहाइड्रेट्स ये बहुत अलग काम करता है। और यही अगर हम लोग उसका सिर्फ एक्सट्रैक्ट ले, स्टार्च ले सिर्फ विदाउट फाइबर, तो ये अलग काम करेगा। तो ये आपको समझना चाहिए कि कैसा है ये माइक्रो और मैक्रो के बीच में फर्क। इसमें से सेपरेट किया जाता है, ये पूरा होलसम होता है। दिस इज अ कंप्लीट फूड, मैक्रो। देन लेट्स गो फॉरवर्ड। what it does is it nourishes and or detoxifies the body. That's the job of a macro. That's the job of food. ये आपके खाने का काम है, या तो खुराक देना या शरीर को शुद्ध करना। ये दो चीजें आपका खाना करना चाहिए। Your food should do these two things. Now what does the micronutrients do? They restore and replenish your hormones, tissues. ये आपको बॉडी को रिपेयर और इसके बीच में लग जाता है। That's a different very very specific functions. Okay, then what are macronutrients in terms? They are completely whole foods. एक एप्पल खाना, पूरा एप्पल खाना और एप्पल का एक्सट्रैक्ट, इन दोनों में फर्क है। So that's exactly, I'm talking about the apple, an apple as a part of nutrition, not the extract of apple as a part of nutrition. Okay, now moving forward, you will see that when you have to understand macro and micro supplements. Now we are going from food that I was talking, now we go to supplements. मैक्रो सप्लीमेंट्स, जो मैक्रो सप्लीमेंट होता है वो होता है बेसिकली होल प्लांट बेस्ड, पूरे वो पेड़ से या फल से या पूरे इससे लिया जाता है, उसी को यूज किया जाता है एज योर सप्लीमेंट, एज अ होल फूड। बट व्हाट आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स? दे आर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम प्लांट्स और हर्ब्स। किसी प्लांट या हर्ब्स में से एक्सट्रैक्ट करके निकाला हुआ चीज ये होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये अलग हुआ। ओके, तो अभी फॉर एग्जांपल आयुर्वेदिक दवाइयाँ होगी या फिर काफी विटामिन और मिनरल्स आपको मिलते हैं, ये आपको उसमें से निकाला जाता है। तो ये प्रोसेस्ड होता है, इसमें से एक्टिव इंग्रेडिएंट निकाला जाता है और इसकी मात्रा पे हमको ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पे यू हैव टू सी मैक्रो supplements, macro food supplements, they are safe even in large amounts because you have to consume them in large amount because they are in raw form. ये जो होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स, ये लार्ज अमाउंट में खाना चाहिए, ये अच्छी मात्रा में खाना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी भी होता है कि आप ज्यादा खाओ। लेकिन ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, यहां आपको ध्यान रखना पड़ता है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू टेक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बिकॉज यू कैन नॉट टेक देम इन एनी अमाउंट. You cannot exceed a certain amount. That is why even FDA prescribes a certain limitation for every vitamin, mineral, and it is very important you follow those guidelines. लेकिन that's not the case with food proper. That's not the case with macro supplements. Macro supplements आप जितना चाहिए उतना ले सकते हो, इससे आपको नुकसान नहीं पहुंचता.
Now here, as I said, macronutrients they detoxify, nourish and balance your body. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? ये आपके शरीर को जो नरिशमेंट है वो देगी, फिर पोषण देगा, फिर आपके शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन करेगा और शरीर में बैलेंस भी लाएगा. बट व्हाट डज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट डू? माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या करता है? ये आपके शरीर में जो है रिस्टोर करता है जो कम है, जो जिसकी डेफिशिएंसी है. शरीर जब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अंदर जाता है तो शरीर को जब चाहिए तो लेगा, नहीं चाहिए तो वैसे ही छोड़ देगा. Like for example, I take a lot of spirulina. If my body is deficient of iron, मेरा शरीर स्पिरुलिना से लेगा चाहिए जितना, लेकिन नहीं है डेफिशिएंट तो नहीं लेगा, उसको रहने देगा. But that is not the case with an iron supplement. When I take iron, if my body needs it and doesn't need it, it is definitely going into my bloodstream. That is the difference between the iron as a micronutrient and iron as a food source from spirulina. आगे चलते देखो, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ये रोज खाना चाहिए क्योंकि ये खाना है. टू बी कंज्यूम डेली इज व्हाट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नीड टू बी डन, सप्लीमेंट्स नीड टू बी डन. बट इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इट्स नॉट नेसेसरी, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ डेफिशिएंसी. अगर आपको स्कर्वी है तो विटामिन सी आपको लेना पड़ेगा. आपके अगर बोन्स और जॉइंट्स में प्रॉब्लम है तो आपको विटामिन बी, कैल्शियम सप्लीमेंट लेना पड़ेगा. These are part depending on your deficiency and symptoms. So they act like medicine. Definitely they need the suggestions and the guidance and supervision of a medical professional. इसमें आपको चाहिए माइक्रो में. Macronutrients में the immune system it actually helps, it builds, strengthens and your immune system. जो हमारा खाना होता है यही हमारे शरीर की जो रोग प्रतिकार क्षमता जो है इसको बनाता भी है और ताकत भी देता है. व्हाट डज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डू? एट द टाइम दे कैन हेल्प टू इंप्रूव द मेटाबॉलिज्म, दे कैन बूस्ट द इम्यून सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, मुझे सर्दी खांसी होगी, फॉर एग्जाम्पल आई हैव कफ एंड कोल्ड, टेकिंग ऑफ विटामिन सी इन दैट पीरियड कैन रियली हेल्प, बट दैट इज for that temporary period. That is to boost the immune system. That is in that short period. But if I have to strengthen my immune system that I don't fall sick, I need macronutrients. Please आप ये difference समझो, बहुत important है. फिर ये है food proper. ये आपके लिए macronutrients ये खाना है और यहां पे हम उसको एक दवाई का ही पार्ट माना जाता है. This is considered as a part of medicine. So this is very, very important. If you are in DXN, if you are dealing with any of macro food supplements, if you are in what Dr. Lim calls the macrotherapy, that is gynotherapy, then you need to know this very, very important thing. Now, again, I am pulling up some things so that you have a comparison. When I talk about Ganoderma, our RG and GL, if you see, I have this bottles also here, I consume them. So these RG and GL, okay, these RG and GL, what you see on the screen is basically Ganoderma, the whole Ganoderma. We don't extract, हम उसमें से कोई चीज निकालते नहीं है, ये खाना है. अब आप पूछो अपने आप से ये कितना खाना चाहिए? ये तो खाना है. गन्ने का जूस कितना पीना चाहिए? पीना चाहिए 1 ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं है. How much should I eat? What is the dosage? This question is absolutely one of the questions that I've been trying to tell people, that टेक एज मच एज यू कैन. आप जितना ले सकते हो उतना अच्छी बात है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप ये समझो कि ये जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, हमारा जो गैनोडर्मा है, इट्स अ मैक्रोन्यूट्रिएंट. सो it follows the exactly all the things that I said about it helps to nourish, it helps to detoxify. ये आपके शरीर को ताकत भी देगा, ये आपके शरीर को शुद्ध भी करेगा, ये जितना भी खाओ आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसको किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती है, ये आप अपने हाथ से खुद ले सकते हो. आपने गलती से पूरा बॉटल भी खा लिया तो इससे नुकसान नहीं है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. ये सवाल जो है ना, इसके बाद किसी ने मुझे कितना डोसेज लेना चाहिए ये नहीं पूछना चाहिए. ओके, जिसको ज्यादा प्यास लगी वो 1-2 लीटर पानी पी सकता है, जिसको कम लगी वो कम पिएगा. सो पर्सन सफरिंग फ्रॉम कैंसर probably will take more of that because he is more thirsty. The body needs more nutrition at that time, so he will take more of the supplements. That's why we have the mega dose concept. But the other side, we have a lot of products in the market that claim to be liver detox, then they talk about all the micronutrients in it and all those things. That's a separate category. वो दवाई वाला category, वो डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करने दो. Let the doctors prescribe that. This is not a doctor's prescription. This is a man's food.
ये एक साधारण आदमी का खाना है और ये स्पेशल फंक्शनल फूड है। अब स्पिरुलिना ले लो, अब स्पिरुलिना भी देख लो। स्पिरुलिना है rich in iron, all the multivitamins, but we never talk about that multivitamins, iron, and all. We don't talk about micronutrients. We talk about basically food. How is it? ये कैसा है खाने में? ये आपके शरीर को ठंडा करता है, अल्कलाइन है, पित्त को शमन करता है, आपके एसिड को कम करता है। What we talk about is as a food. It reduces your acid in your blood. It is alkaline. It's a rich source of many nutrients. We talk like this. This is how you have to speak when it comes up to macronutrients, like food. Very very important. Not like the iron supplement. You are suffering from anemia. आपको खून कमी है, हेमोग्लोबिन कमी है, इसलिए आप 2 कैप्सूल लो, 4 टाइम लो, 3 टाइम लो. Please understand this difference. Very very important. Okay. Then you look at our noni, a morenzi juice. Morenzi juice, Laszlo is the best proof. He drinks it like a fruit juice, and people yet ask me how much ml I should take. 30 ml before food, after food? No, that is a fruit juice. You never ask me how much mango juice I have to take, how much apple juice I have to take. आप जब मोरेंजी की बात आती है तब लोग मुझसे पूछते 30 ml लूं, 20 ml लूं, 40 ml लूं. वो एक फ्रूट जूस है, एक फल से बना हुआ है जिसका नाम है मोरिंडा सिट्रोफोलिया. आप उसको जितना लोगे वो उतना अच्छा है. आम, जैसे आम हम लोग खा लेते, 1 आम या 2 आम खा लेते, उसी तरह एक मोरिंडा सिट्रोफोलिया खा लिया, 2 खा लिया, क्या प्रॉब्लम है? एक बोतल में शायद 1 मोरिंडा सिट्रोफोलिया होता है, तो एक, जैसे हम लोग एक मैंगो का जूस पी लेते हैं उसी तरह ये पी लिया तो भी अच्छा है. तो ये आपको समझना चाहिए. लेकिन जैसे ही हम दूसरी तरफ जाते हैं, जब हमारे गट के लिए कोई किसी ने बोल दिया कि आपको अतड़ियों के लिए अच्छा सप्लीमेंट है, वो अलग सप्लीमेंट, वो होता है एक्सट्रैक्ट. अगर जो मेडिसिन है जिसकी बाद में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे तो उसको छोड़ दो, वो अलग कैटेगरी है, वहां पे नहीं जाएगा. हम लोग वहां पे नहीं जाते. वी डोंट गो इनटू दैट कैटेगरी. यू सी, आई हैव ब्रॉट अ लिटिल मोर एग्जांपल्स. रोजेल इज रिच इन विटामिन सी, सो रोजेल जूस इज गुड. विटामिन सी, ये नींबू पानी जैसा है. इट्स लाइक लेमन जूस, इट्स लाइक रोजेल जूस. नाउ दैट आल्सो यू कैन ड्रिंक, नॉट अ प्रॉब्लम. Now people are worried, उसमें शक्कर है, that's sugar, but it's cane sugar. It's like, okay, with vitamin C and all those things coming in natural form, you're taking the roselle juice with the cane sugar, that is fine. But if you go for vitamin C only, proper vitamin C, not good. If you take anything excess, more of vitamin C, it can land up into a lot of problems. Your gut, you can have inflammation in your gut, you can have loose motion, fatigue, tiredness, vomiting, nausea. ये सब symptoms ज़्यादा विटामिन सी से भी तकलीफें होती है. तो you have to be very careful. Let's go down. Cocoa. Now cocoa is another food supplement, macronutrient. Very good for children. But what do people talk about? Micronutrients for children. No, cacao has enough. So a cocoa fits into the plan of macronutrients. While there are other food supplements that people talk about, micronutrients and all those things, that is different. We don't talk about that. So our vitamins and minerals and everything come from macronutrients. फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो हमारा जो कॉफी है, कॉफी भी macronutrient है. It's a proper food. While there are now stuff selling in the market like coffee bean extracts, that extract is medicine. Okay, that is totally different way of dealing with this. Let's move forward. Now virgin coconut oil. Virgin coconut oil is macronutrient. Okay, we talk a lot about its micronutrient properties. It's got this, it's got that, it's got that, blah blah blah, but basically it's macronutrient. Okay, now there are others that people talk about, how omega-3, omega-6 fatty acids are good. That's a different as food, as medicine. ये आपको समझना चाहिए. ये अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको ये पता चलेगा कि मेडिसिन और एज फूड सप्लीमेंट और फूड एज फूड सप्लीमेंट में फर्क है. Then we go to chai, tea. Tea is also very very important as a macronutrient. That is why tea alone can be said to be a complete healer. It can rejuvenate you, it can boost you, it can make you feel good, it can also repair you and it can help you in healing. ये चाय अकेली भी आपके बॉडी में बहुत सारी चीजें कर सकती है, आपको पूरी तरह सुधार सकती है. लेकिन चाय का एक्सट्रैक्ट निकाल के आपने अगर उसमें से दवाई बनाई, इसको आपने सप्लीमेंट बना दिया, वो अलग हो गया. दैट्स अ टोटल डिफरेंट कॉन्सेप्ट.
Same is with cordyceps mushroom. Cordyceps mushroom is basically nothing but we take the cordyceps, we grow it, we convert that into a powder and we give you the whole cordyceps mushroom. लेकिन उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के किसी या उसी तरह फ्रॉम अदर प्लांट एक्सट्रैक्ट यू टेक आउट सम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड यू मेक सम सप्लीमेंट आउट ऑफ इट, दैट इज टोटली डिफरेंट. सो एक्सट्रैक्ट्स is different. Extracts में quantity makes plays a very important role, but in wholesome food there is no प्रॉब्लम विथ क्वांटिटी. आपको ये समझना बहुत ही जरूरी है. ये अगर आपको समझ रहा है तो आपको ये समझेगा कि DXN के प्रोडक्ट्स क्यों लेना चाहिए और इससे क्या फायदा होता है. तो बिफोर आई टेक अ शॉर्ट ब्रेक, यू जस्ट वॉच दिस स्मॉल क्लिप अबाउट what is carbohydrates, proteins and fats. Just a little animation. एक छोटा सा एनिमेशन देख लो carbohydrates, proteins और fats के बारे में. मैं 2 मिनट में वापस आया. Carbohydrates, proteins and fats. Carbohydrates. These are the body's main source of energy. There are 2 types of carbohydrate: complex, starch, and simple, sugar. These are stored by the liver and muscles until they are needed. Proteins. These are made of amino acids which the body needs to make from food and help the body grow and repair itself. For example, after working out and lifting weights, proteins are needed in order to repair muscle and grow stronger. Fats. These are made of fatty acids and glycerol. Fats keep the body warm, protect organs and assist certain organs in absorbing vitamins. Some fats are converted into 2 types of cholesterol, high or low density lipoproteins. HDLs are good for the body as they help it remove the excess LDLs. So now we come, I've made it easy for you to understand the difference between macro and micronutrients, and yet I see somebody asking me a question. ये question somebody asking me, Sushil Pednekar. The question he's asking is, when vitamin C is rich in lemon, why we need to take Roselle? See, Sushil, this question you have to understand. Now we are talking about macronutrients and we are using micronutrients as an example to talk about it. I said micronutrients and macronutrients, they are 2 different things. Macronutrients contain micronutrients, but they contain in a spectrum. Like the color screen that I showed you, that when you see the red color, one is a dark red, one is light red. So in nature also, vitamin C in different forms, in different combinations, in different fruits is in different variations, and everything is biologically little different to act in a different way. जब आप रोजेल का विटामिन सी लेते हो उसका काम कुछ अलग हो सकता है, और मतलब विटामिन सी है ये टेक्निकली हुआ, लेकिन एज अ होलसम फूड इट हैज गॉट डिफरेंट प्रॉपर्टीज. ओके, एंड दैट इज व्हाई इट इज डिफरेंट. लाइक ऑयल ऑफ ऑलिव इज डिफरेंट एंड ऑयल ऑफ कोकोनट इज डिफरेंट. तो ये दीज आर डिफरेंट बट दे आर ऑयल. सिमिलरली विटामिन सी and vitamin C, but from what source they come, they make a huge difference. So Roselle is very rich in vitamin C, very good for the heart, especially for atherosclerosis. It helps in rejuvenating yourself. It helps in reducing your inflammation. There are a lot of benefits. So hope you understand. So do not confuse yourself with micronutrients and try to explain macronutrients. Macronutrients is the big bag that contains all the micronutrients. So we talk about functions. What is this? What is the property of a chili? So chili is to give the spice and the taste. And in the next episode, I'll be talking on the 6 tastes, and then you'll get to know why even food matters in terms of its taste. Similarly, macronutrients are basically for that. Okay, so I will take in a few questions if some pop up like this, but my questions to you now, because you are the audience, आप लोग सुन रहे हो मेरे, तो मेरे आपसे सवाल है, क्योंकि these questions are related to some of the greatest lifestyle mistakes that we have been doing, and yet we are ignorant about it, and it takes a lot of effort to help people understand, which is very difficult for them to understand. मैं इसीलिए आपको ये सवाल पूछने वाला हूँ, and you will try to answer that in the comment section, and next week I'll answer them and explain you what it is. So my first question is, before that I take this question from Prince Karmali.
यस सर, मैक्रो सप्लीमेंट से माइक्रो न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा प्रिंस ने। ये इसलिए पड़ी क्योंकि उसका इस्तेमाल दवाइयों की तरफ हो सकता है, उसको आप प्रैक्टिकली दिखा सकते हो। आपका विटामिन सी कम हो गया, आप ले लो, विटामिन सी बढ़ गया। ये दवाई जैसा काम करना पड़ता है ना, इसीलिए इसकी जरूरत पड़ी। जब फार्मास्यूटिकल कंपनी को पता चला कि ड्रग्स अकेले काम नहीं कर सकता, न्यूट्रिशन की जरूरत है, न्यूट्रिशन होलसम नहीं करते हुए उन्होंने ये वाला कॉन्सेप्ट निकाला, जहां जहां ढूंढ ढूंढ के विटामिन निकाले, मिनरल्स निकाले, इतने डिटेल में गए कि हर चीज को टुकड़ों में तोड़ दिया, और हर चीज के पीछे वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद उसको रिप्लेनिश करते हैं। जैसे विटामिन B12 अगर आपका कम हो गया तो आपको विटामिन B12 के इंजेक्शन दे देंगे, खत्म। आयरन कम हो गया, आयरन दे देंगे। आयरन अकेला कैसे कम हो गया, उसके साथ तो 10 लोग और रहेंगे, तो वो सबके बारे में नहीं सोचेंगे, जो कम है उसी को देखेंगे, बाकी किसी के बारे में नहीं देखेंगे। दैट इज व्हाई इट हैज हैपेंड, दैट्स हाउ द फार्मा सेगमेंट वर्क्स। बट एनीवेज, वी आर इन द डिफरेंट सेगमेंट, वी आर इन द फार्मिंग सेगमेंट। अब मेरा सवाल आप लोगों के लिए, फॉर यू ऑल नाउ, आई वॉन्ट यू टू टेल मी, आप लोग प्लीज मुझे ये बताएं कि हरी सब्जियां को खाने में कैसे खाया जाए, कैसे सब्जी बनाया जाए। ये सवाल आप लोगों के लिए है, बिकॉज आई एम श्योर एवरीबडी इज कुकिंग, बाइंग ग्रीन वेजीज, दे आर thinking that there are people I know, a lot of diabetic people also, hypertensive people also, they go out and they buy all the green veggies and then they come home and they cook, but are they doing right? क्या वो सही कर रहे हैं कि नहीं? जो भी बीमार लोग हैं, जो ये हरी सब्जियां लेके आ रही, मैं पत्ते वाली सब्जियों की बात कर रहा हूं, ओके? तो इनको कैसे बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है, ये आप लोग प्लीज बताएं। प्लीज लेट मी नो हाउ टू कंज्यूम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। देन my next question to you all is lemon, because that's my favorite and that's the biggest mistake that I've been seeing people doing. Last few months back, my daughter's friend's father was admitted to the hospital, non-smoker, non-drinker, very healthy lifestyle, but yet had a blockage in his heart. मेरी बेटी के दोस्त के पिताजी को हॉस्पिटल में एडमिट किया क्योंकि हार्ट में ब्लॉक हुआ था, और ना वो दारू पीते हैं, ना सिगरेट पीते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं करते, जीवन को बहुत अच्छी तरह जीते हैं, लेकिन फिर भी उनको ब्लॉक हुआ। और उन्हीं के साथ पीछे एक व्यक्ति बैठा था जिसको भी ब्लॉक हुआ था, वो एक ही रूम में थे। सो देयर वाज अनदर पर्सन इन द सेम रूम दैट ही वाज एडमिटेड। आई वेंट टू सी हिम, मैं उधर मिलने गया, और जब वहां मुझे एक चीज़ पता चली कि उनको कोई और गलत आदत नहीं थी, उनको नींबू खाने की आदत थी, सिर्फ तरीका गलत था। So I want you to tell me what, because lemon, if taken wrong, can become one of the major reasons for your cardiac blockage. Okay, so how do you consume lemon? What is the right way of consuming lemon? ये नींबू को कैसे खाना चाहिए और कैसे उसको यूज करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? Please answer this question of mine too. It is very important. And then we have talked about फैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मैंने फैट की बात की, ये खाने में बहुत ज़रूरी है। शायद इसीलिए इंडियन कुकरी में हम तेल का यूज़ करते हैं, खाना तेल में पकाते हैं, क्योंकि तेल से ही स्वाद आता है, तेल से ही आपके शरीर के जो जितने भी खाने में विटामिन मिनरल्स होते हैं वो आपके शरीर के अंदर जाते हैं, वही पचते हैं। अगर आप तेल नहीं खाओगे तो होगा नहीं। तो it means oil or fat plays a vital role in the absorption of the minerals and vitamins and everything, all your micronutrients. So when fat is so important, what are we doing wrong? कैसे बना रहे हो खाना, क्या गलत हो रहा है, किस चीज में सही बनाना चाहिए, क्यों बनाना चाहिए, इसके बारे में आप प्लीज टेल मी। वेदर कुकिंग विद घी और ऑयल इज गुड, शुड वी कुक इन घी एंड ऑयल, हाउ शुड वी कुक, if not, how should we not cook? Please tell me all this. I'm going to wait for your answers. These three things are going to be very very important for you, because if you get the answers, अगर आपको इन तीनों के सवालों के जवाब अगर मिल गए, आपने अपने लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा चेंज किया। जो मैंने करके देखा है मेरे लाइफस्टाइल में, मेरे फैमिली की लाइफस्टाइल में, और काफ़ी फ़र्क पाया है। I've done a lot of changes in my lifestyle and I found a major difference in our personal health. So I want you to answer this. I'm not going to answer this right now. I'll leave something for you to work on so that we catch next time. Okay, so we will see if I see any questions coming up. Let me see if I see any questions. Except black. Okay, let me see. Here we have Alay Parik.
except black coffee. All our coffee contains sugar. Is it okay all the time for all people? Alay, I asked this question to Dr. Lim very directly. It is cane sugar, and sugar also is a carbohydrate, a macronutrient in its natural form. If it's not an extract, then it is fantastic to take, no problem. It is yet a healer, and with coffee it blends well. So people who have a problem with taste, coffee with our existing sugar in it is fine. It's safe to be consumed, very, very safe, so don't worry about it. Okay, so I think some oh yeah, so there are some amazing questions. So I'm going to find it really interesting. काफ़ी लोगों के जो आंसर्स है उसमें से काफ़ी लोगों के आंसर्स भी बहुत ही गलत है, और इसीलिए मैं वो कहता हूँ कि this is going to be a fun show where you will get to know what wrong you're doing, because many a times we don't realize that we are doing wrong and we just keep on doing wrong. Anyways, I see no more question coming up, so for now I'll wait for a few minutes and then we continue again. So we have a lot of people here. So good morning, DXN. Okay, this question is from Chiran Rana. Okay, Chiran Rana, I'll pull up your question on screen. Yes. So good morning, DXN, now running my 30th years and my height in 5'9" and I am 62 kg. I want to gain little weight but I couldn't. What should I do, or which product is suitable for me? Which food is suitable for what lifestyle you're leading? Okay, so for you, Chiran, having the right food is very important. You're just 30 years old. 30 years old means your body's metabolism is high. पित्त जिसको हम बोलते हैं वो ज़्यादा है. पित्त को आप जितना अल्कलाइन फूड से कम करोगे, स्पिरुलिना ज़्यादा लोगे, वर्जिन कोकोनट ऑयल ज़्यादा लोगे, जीएल ज़्यादा लोगे, आरजी ज़्यादा लोगे, ये आपके शरीर में उतनी अल्कलिनिटी पैदा करेगी. जितनी अल्कलिनिटी आएगी उतना शरीर में ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा. ओके, सो वी मूव फॉरवर्ड. शिवराम खुर्स, okay, let me see if yes, Kurse, Shivaram Kurse. Doctor, are you sure macro will not harm any parts of the body? Yes, Shivaram Kurse, 20 years of my experience as a physician, as a person, I can tell you, eating a lot of bananas cannot harm you, eating a lot of apples cannot harm you, eating a lot of RGGL, spirulina, your virgin coconut oil cannot harm you. Understand, these are macronutrients, but exactly opposite, vitamin C, vitamin D, vitamin E, calcium, iron, all of that in excess will definitely harm you. Okay, so we have I'm going to check out. Okay, Tinku Hore, yes. What is non-dairy creamer used in DXN products, and what is the role of cow's milk in human body? Yes, now non-dairy creamer is basically the soya creamer. We use a non-dairy creamer, so definitely very, very safe even for people who have lactose intolerance. The role of cow's milk in human body is basically a questionable question. Why? Because cow's milk is basically meant for the calf. Cow's milk now is very much questionable because in the way the cow are being treated, the cow are being fed. So I keep that topic for a different discussion. Okay, so now we have Dr. Poovan. One question from Dr. Poovan from Australia. Ganoderma extract is considered macro or micronutrient. I understand it is a natural source. Ganoderma extract will be, if it is extracted out through a process by boiling and separating out the ingredients. So there is a difference between separation from fibers. They say to take out the juice from the lemon, to take out the juice from the sugar cane is still macronutrient. You understand? Taking out the juice from the apple is still macronutrient. But to taking out the active ingredient out from that and claiming that to have all the properties of the basic herb is micronutrient. So if Ganoderma somebody is doing that, then it is micronutrient. In our case, it is completely macronutrient. Okay. I think we take one more question before I end, because it's almost time now, 5:58 in my screen. Which DXN products? Okay. Now here again, Kamala Ale. Which DXN products are good for the anemia?
I told you, right? This, which food is good for anemia? Basically, all the food. Your Ganoderma, your spirulina, primarily spirulina, then your Moenzi for your daughter, then your virgin coconut oil, all these together. Even in small quantities, if you feed them. See, food needs to be multi-food, not single food. If you have a variety of food, your body loves it. In DXN, I always tell, give the person a variety. Don't stick them to one particular. Don't act like a micronutritionist, just giving them single drugs or single supplements. Try to give them a wholesome supplement. Give them a range. Tell them to take everything, and then you see they have an amazing transformation. So that's all from my side. Hope you like the show. If you like it and if you want me to continue doing this show, please put in your comments. We'll have the sessions continue slowly. We'll go deeper and deeper into this subject that we call lifestyle as medicine, because in future we don't need doctors, we don't need nutritionists, we need lifestyle coaches. Lifestyle coaches that can help people to change their lifestyle. And lifestyle means not only your physical body, but your mental well-being also. And with me in this journey, probably in now another 6 months, 1 year, I will be able to transform a lot of people into lifestyle as medicine coaches, and then you can definitely just alter lifestyle a little bit and help people and help yourself, help your family members. आप मेरे साथ रहिए. मैं कोशिश करूंगा जीवन शैली से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां हैं उसमें कैसे आप सिर्फ जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव करके आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज में से काफ़ी लोगों को कैसे हेल्प कर सकते हैं, और DXN के प्लेटफॉर्म से, DXN की मदद से आप कैसे लोगों को बचा सकते हो. आने वाली बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होने वाली है. अगर आपने अभी से ही अपनी रोग प्रतिकार क्षमता, अपनी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की कला नहीं सीखी, तो आगे चल के बहुत मुश्किल हो सकती है. सो थैंक यू वंस अगेन. सी यू सून. टुमारो वी हैव अ नेक्स्ट शो कमिंग अप, आस्क डॉक्टर लिम. टुमारो इज थर्सडे 5 PM. रिमेंबर, आस्क डॉक्टर लिम. Please post your questions on this section. Here also if you post, it's okay. For ask Dr. Lim, just write ask Dr. Lim this question, ask Dr. Lim ये क्वेश्चन. अपने सवाल वहां पे नीचे डालिए. आस्क डॉक्टर लिम ये सवाल, आस्क डॉक्टर लिम ये सवाल. कल डॉक्टर लिम का शो है 5 बजे. मैं 10 सवाल उसमें से लूंगा और डॉक्टर लिम को पूछूंगा. तो आपके सवाल हो सकते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपके सवाल हो सकते हैं बिजनेस से रिलेटेड, आपके सवाल हो सकते हैं शून्य से रिलेटेड, लेकिन जरूर पूछिए. यू कैन आस्क डॉक्टर लिम एनी क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स, इन बिजनेस एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ शून्य, एंड आई विल पुल अप 10 questions to ask Dr. Lim tomorrow. So till then, thank you so much. Have a great day. Stay home, stay safe, and consume a lot of DXN products, because that is how you feed your hungry cells. Thank you so much. Take care. कोरोना बॉस, उन्होंने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला कर लिया है. इतनी सी बात तो तुम घबरा कर मेरे पास चले आए. अब तक ऐसा कहीं नहीं हुआ कि हमारा इन्फेक्शन बेअसर साबित हुआ. लॉकडाउन बढ़ाने से क्या होगा? कुछ प्रॉब्लम है क्या कोरोना डार्लिंग? कुछ खास नहीं मोना डार्लिंग, बस ये लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं. स्मार्ट बॉय को जरा फोन लगाओ. ओके. स्मार्ट बॉय, सुना है लॉकडाउन बढ़ाकर तुम मेरे इन्फेक्शन का धंधा बंद करना चाहते हो. अब कब तक लॉकडाउन लगा के तुम मेरे इन्फेक्शन को रोक सकोगे? मोना, इनसे कुछ नहीं होना. माइकल, निकालो साइकिल और फैला दो इन्फेक्शन चारों तरफ. अबे हो चिंदी चोर छाप लेवल की इन्फेक्शन, खामोश. जब कीड़ों की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है, लेकिन जब तेरे जैसे छपड़गंजू वायरस की मौत आती है तो वह हिंदुस्तान की ओर भागता है. और एक बात, माना कि तेरी वजह से लोग परेशान हैं, थोड़ा गम है, लेकिन तेरी मौत का आखिरी वारंट खुद हम हैं. रख फोन. माइकल, पंक्चर होती दिख रही है अपनी इन्फेक्शन की साइकिल.